So today we will start a non-measurable set. Non-measurable set. So before coming to the non-measurability, we have to define some of the definitions. Number one is sum definition, sum modulo 1. Right? Sum modulo 1. If x and y are real numbers in the interval, this is the semi, 0 से closed है और 1 से क्या है open, then the sum modulo 1 is denoted and defined as x plus y. इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे और डिफाइन कैसे करेंगे. It will have the two values. The one is x plus y and the other is x plus y minus 1 when x plus y is less than or equal to 1 and if x plus y is greater than or equal to 1. It will have the two values, sum modulo 1. Next is a translate modulo 1. Second definition is translate modulo 1. If E is a subset, if E is a subset, if E is a subset of the interval 0 to 1, then the translate modulo 1 of E by Y. ट्रांसलेट है इसका मतलब किसी नंबर से, किसी डिजिट से, किसी नंबर से, हाँ इसकी ट्रांसलेशन हो रही है, is defined to be the set given by this is equal to z such that z is equal to x modulo sum modulo 1 for sum x belongs to A, right? क्योंकि E प्लस y है, E जो है ये कहां से आ रहा है, x में से आ रहा है, प्लस y तो ये इनबिल्ट है बीच में. सो इसमें जो members होंगे they will be of the form z, and what is z? Z is a sum modulo 1. So they are the sum of the properties of these modulo. Number one, if x and y they belongs to the interval 0 to 1, then the sum modulo 1 it also belongs to the whatever value it will give, either x plus y or x plus y minus 1. It will be the part of the interval 0 to 1. This is number one. Number two, the operation this, ये जो operation है is commutative and associative. Commutative and associative. So what does it mean? Commutative और associative है. Commutative का मतलब हुआ x plus y is equal to y sum modulo, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और एसोसिएटिव में अगर हमारे पास 3 है लाइक दिस, ठीक है जी, सो यू कैन राइट लाइक दिस, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं. सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 2. नाउ वी विल डू वन थ्योरम रिलेटेड टू इट. Let E is contained in the interval 0 to 1. Be a measurable set.
then for each y belongs to the interval 0 to 1, the set E plus y is measurable, and measure of E plus y is equal to measure of. So what we want to prove that the Lebesgue measure is invariant under translate modulo 1. इसका नाम क्या है, ये सेट का नाम क्या है, translate modulo 1. What do you want to prove? That it is Lebesgue measurable and its measure is translation invariant. Is invariant. It is invariant, right? So let's start its proof. Let, और आप स्टेटमेंट और करके लिख सकते हैं, Lebesgue measure is invariant under translation modulo 1. So let E1 is equal to, सबसे पहले हमने सेट डिफाइन किया E intersection 0 1 minus y, right? And E2 is equal to E intersection 1 minus y, और यहाँ पर ऑपरेटर, क्योंकि 1 से आगे आप जा नहीं सकते, 0 से पीछे आप जा नहीं सकते. सो हमने क्या किया, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड वी हैव हियर इसके पीछे वाला एक आ गया 1 माइनस वाई, तो एक हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया और इसकी इंटरसेक्शन हमने कर दी सेट ई के साथ. दोनों की जो इंटरसेक्शन की हमने, इसकी इंटरसेक्शन हुई. अब ई जहां भी है, सपोज करो ई जो है वो 0 और 1 के बीच में कंटेन है, ठीक है. सपोज करो ये ई आ रहा है, दिस इज द टोटल ई. सो उसमें से इतना पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, this part is taken as E1 because this is the intersection of E and the interval 0 to 1 by minus 1. This is the intersection of E and 1 minus 5 to 1. Now we will find their union and their intersection. So E1 union, E1 intersection E2. This is equal to E intersection interval 0 to 1 minus y intersection E intersection 1 minus y to 1 open interval, right? So E intersection बार बार आ रहा है, so आप इसको एक ही बारी में लिख देंगे. So 0 to 1 minus y intersection 1 minus y to 1. अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, so this is the intersection phi, this is equal to phi. Now when you will take the union, मैं एक ही स्टेप में चेंज करूंगी. जहां पे आपका इंटरसेक्शन है ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपका अगले केस में यूनियन आ जाएगा. इसका मतलब यहाँ यूनियन में बदल जाएगा ये, राइट. और इन दोनों की यूनियन मिला के क्या बन जाएगा, इंटरवल 0 to 1. और इनकी इंटरसेक्शन में कौन आएगा. So E1 and E2 that we have defined, their union is a set E itself and their intersection is equal to phi. It implies E1 and E2 are two disjoint measurable set whose union is A. Therefore, measure of E is equal to measure of E1 plus measure of E2. Let it be number 1. Now, हमें पहुंचना कहाँ है, अब हम निकालेंगे ट्रांसलेट मोडुलो 1 for E1. This is defined as x plus y, where x is coming from E1. So you will put the value of x here, E1 here.
So this is E intersection 0 to 1 minus y. This is equal to x belongs to, अभी आपने इनकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट की, वैसे भी when you will have E intersection, so क्या आएगा इसमें, you have this, देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब ई में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, सो हमने इसमें से उठा लिया, एक्स जो है दूसरे वाले में से उठा लिया, दोनों में आ रहा है, सो वी अकॉर्डिंग टू द नीड वी हैव टेकन एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 1 minus y, right? It implies x plus y and x 0 less than x less than 1 minus y, right? So this is equal to, it implies x plus y is less than 1. तो यहां से आपका आ गया e1 plus y is equal to some modulo such that x plus y is less than 1, right? So this is, what is this, x plus y less than 1? It implies x belongs to e1, बिकॉज अब देखो ना मॉडुलो में अब x बिलोंग्स टू e1, तो ये हमने यहाँ से पर्टिकुलरली x प्लस वाई की वैल्यू निकाली, एक्चुअली हमारे पास क्या आ था, x बिलोंग्स टू e1 इंटरसेक्शन 0 to 1 minus y, ये दो तरह की नोटेशन, दो में था, ये इसमें भी था और इसमें भी था, इस वाले में, तो यहाँ से पहले लेके हमने ये कंडीशन निकाल दी भी x प्लस वाई जो है दैट इज लेस देन 1 है, राइट? e1 नहीं है बेटा, यहाँ पे e ही है, तो अल्टीमेटली x तो e1 में से ही आ रहा है, सो x प्लस वाई लेस देन 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम मॉडुलो, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता दो वैल्यूज हैं, तो वन इज लेस देन, वन इज x प्लस वाई एंड अदर इज x प्लस वाई माइनस 1. सम मॉडुलो की पहले साइड पे वैल्यू लिख लेंगे हम, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई व्हेन x प्लस वाई लेस देन 1 एंड x प्लस वाई माइनस 1 व्हेन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो लेस देन 1 के लिए यहाँ से आपका ये मॉडुलो का साइन हट जाएगा, so it implies e1 translate modulo is equal to x plus y, ये वैल्यू बेटा हमारी this value we have got, and this is nothing but e1 plus y, translate modulo of e1. Similarly, on the parallel ground we will calculate e2 plus y. सेम, जहां पे अगर यहाँ पे कंडीशन x प्लस वाई लेस देन 1 है, वहां पे आपकी x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, और जब ग्रेटर देन 1 आ जाएगी तो उस हिसाब से मॉडुलो की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 1, x बिलोंग्स टू e2, सो दिस बिकम्स e2, x कहां से आ रहा है, e2 में से, ट्रांसलेशन कितनी हो रही है उसमें, y माइनस. So we have converted the translate modulo into simple ट्रांसलेशन ऑफ द वेरिएबल्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, सो दिस बिकम्स e1 प्लस y एंड दिस ट्रांसलेट मॉडुलो बिकम्स e2 प्लस y माइनस 1. अब m is translation invariant, we have already proved in the previous theorem it is translation invariant. It implies measure of is equal to measure of e1 plus y, and this is equal to measure of. Similarly, measure of the translate modulo will be equal to measure of e2 plus y minus 1, which is equal, जितना मर्जी ट्रांसलेशन हो जाए आपका आंसर एग्जैक्ट रहेगा दोनों का, measure of e2. Now e, actually we are talking about e plus y, so e, it is a combination of e1 union e2 plus y, so this is e1 this union this, right? And these are disjoint sets. Here is it, disjoint measurable sets. Therefore, अगर ये डिस्जॉइंट मेजरेबल सेट्स तो यूनियन है, तो e प्लस वाई भी ये ट्रांसलेट मॉडुलो भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल. डिस्जॉइंट मेजरेबल सेट, इट इंप्लाइज e प्लस वाई इज
a measurable set. And what is the measure of E plus Y? So this is measure of E1 plus Y plus measure of E2 plus Y. Translate modulo दोनों का. And we have already proved that this is measure of E1 and this is measure of E2. And what is it? This is measure of E. So we have proved that that the translate modulo 1 is a measurable set and its measure is equal to the measure of the given set A.